Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we will do exercise L, page number 73. And this exercise is of chapter 4, Luqman's advice. And we have to do this exercise in your grammar copy. So, students, what you have to do, you have to write the question from page number 73 in your grammar copy, and then you have to write answer. Which answer? These answers. You have to make these characteristics like I have drawn, and then you have to write their dialogues like I have written in the boxes. क्या करना है आपको स्टूडेंट्स? आपको ये जिस तरह से मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हैं इस तरह से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, इसके आगे आपको पॉइंट आउट करने हैं इसके डायलॉग्स जो कि बॉक्सेस में यहाँ लिखे हुए हैं. So the first one dialogue of this characteristic is I never wanted to sit here. As you can see this dialogue in a box, I never wanted to sit here. मैं यहाँ पे बैठना नहीं चाहता था. So these dialogues are taken from previous exercise. ये dialogue पिछली exercise से लिए गए हैं, exercise K, page number 73. So on page number 73, as you can see, the first line dialogue is written, I don't want it to sit here, said Ubaidur Rahman. किसने कहा? Ubaidur Rahman. Then what does that mean? कि हमने यहाँ पे उबैदुर रहमान की कैरेक्टरिस्टिक बनाई है ये वाली, ओके, एंड देन इसका हमने ये डायलॉग लिखा है आई नेवर वांटेड टू सिट हियर. तो हमें एक्सरसाइज के में से सेंटेंसेस पिक करने हैं. जैसे कहीं पे कुछ सेंटेंस उबैदुर रहमान ने बोले हैं, कहीं पे कुछ सेंटेंसेस नवीद ने बोले हैं. सो हमें उबैदुर रहमान और नवीद की इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है, एंड देन हमें उसके डायलॉग्स बॉक्सेस में लिखने हैं. दैट इज़ रियली सिंपल क्वेश्चन यू हैव टू डू. आपको बस यहाँ से कॉपी डाउन करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से डायलॉग किसने कहा है, एंड वो आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? येस, फ्रॉम एक्सरसाइज के पेज नंबर 73. यहाँ पे स्टूडेंट्स आई हैव रिटन द डायलॉग्स एक्सरसाइज के पेज नंबर 73. ये मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखे हैं, तो आपको ये कॉपी में लिखना नहीं है. ओके, डिड यू गेट माई पॉइंट? आपको ये कॉपी में लिखना नहीं है. एक्सरसाइज के जो मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा है ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है. व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू राइट द क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 73 एंड देन यू हैव टू राइट दीज डायलॉग्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. बस आपको इतना सा काम करना है. सो फर्स्ट डायलॉग इज़ आई नेवर वांटेड टू सिट हियर. ये उबैदुर रहमान ने कहा, एंड ही से वांटेड टू से कि मैं यहाँ पे बैठना नहीं चाहता था. सेकंड डायलॉग इज़ ओ कम इन नाउ दे आर हार्मलेस डॉग्स, क्योंकि वो कुत्तों से डर रहा था. तो उसके बाद नवीद ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ, ये डॉग्स जो हैं वो हार्मलेस हैं, मतलब आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे. दैन थर्ड वन डायलॉग इज़ आई डोंट केयर व्हाट यू टेल मी, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो. देन अगेन उबैदुर रहमान का डायलॉग है इन दिस लास्ट बॉक्स, प्लीज़ स्टे एंड प्ले टिल सलातुल असर. तो उबैदुर रहमान उसको रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ रुक जाओ, हम एटलीस्ट नमाज के वक्त तक रुक जाओ, उसके बाद हम घर वापस चले जाएंगे. That's all students. I hope you got my point. I hope you understood this question. You have to, I'm repeating again, you have to do this work in your grammar copy. I have written exercise name, I have written page number also. So I hope there will be no confusion. So that's all for today students. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.